Okay ji, let's start the simulation of 3 ammeter method. Start with our component placing. So we require basic source. You can either use an AC source or also up ye same signal with the help of a function generator you can produce it, right? So yes, you can use this AC source or AC power, okay, both are fine. Then AC voltage source, right? Now let's move toward basics and resistor. We need a resistor and either capacitor or inductor, depends on you, both can work fine in it. But specifically calculation which we performed in this scenario, this is for an inductive circuit, ठीक है. Yes, capacitive में minor change आएगा. I told you कि capacitive में instead of IL beneath आपका IL upwards होगा because it is leading the IR by 90 degrees, right? So let's take a resistor of 500 is fine. Let's take it, and a capacitor, or sorry, inductor of 1.3, and a ground. Yes, to place a ground as well, which was in sources. Okay, I guess this is enough. We will be flipping them vertically. Make the circuit, but before making the circuit, just add 3 multimeters. I will replace the source with the function generator because function generator is the exact version of the device which we had used in our lab. Okay, so we will perform this with function generator as well. अच्छा जी, ये आपका कनेक्शन जाएगा in this version, ठीक है. Okay, there is a minor, just redraw it. Negative will be connected to ये आपका series connection जा रहा है, ठीक है. First emitter, then it is connected with your second emitter, and that one is connected with your resistor. Similarly ये भी आपका exactly इसी spot से आगे continue करेगा, and इसको आप ये आपका जाएगा, means you are connecting every single emitter in series, ठीक है. सर्किट में आप सीरीज कनेक्शन दे रहे हैं. exactly यही वर्जन लैब में हुआ है, and plus you can आप इन दो emitters को either पहले लगा सकते हैं फ्रॉम योर रजिस्टर, और यू कैन प्लेस आफ्टर योर रजिस्टर एंड इंडक्टर, ठीक है. मीन्स द सेम, वही करंट आपका फ्लो हो रहा है, सेम सर्किट है, ठीक है. सो लेट्स ग्राउंड इट. चेक योर सिग्नल, ठीक है. इट्स अ 1 volt पीक टू पीक एंड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 kHz. 1 kHz फ्रिक्वेंसी एंड 1 volt पीक टू पीक, आपकी वोल्टेजेस हायर होंगी, बट चेंज योर वोल्टेजेस voltmeter to ammeter and for AC signal. This is your second one, ammeter, and we are measuring AC signal. Again ammeter, and we are measuring AC signal, okay. So three, you have labeled them correctly. Now let's play your simulation. तो आप देखेंगे कि your source is producing a current of 86 milliamperes, जबकि आपके resistor पे जाके it's 1.4, and almost 86 is going toward your inductor. अच्छा, you can use a resistor in, because this is kind of ideal scenario, ठीक है. इसको अगर आप close लाना चाहें actual के, तो in that case you can place in a minor resistance in series with your inductor, which is actually showing the actual scenario, ठीक है. तो let's go for basics and resistor. use any minor value, ठीक है. micros में आप these will be fine है, ठीक है. आप इसको प्लेस कर दें. सॉरी फॉर दिस. अच्छा जी, प्लेस डिलीट दिस वन, एंड इसको आप and this will be connected to your ground, ठीक है. just minor changes हुई हैं. now this in this scenario we'll see
Okay, 86 is 1 point. Acha, it's not that for 86.54 is flowing from your inductor because the resistance is very minor. ठीक है, and यहाँ पे आपका 1.41. Now if you increase this resistance, आप note करेंगे कि it will shift towards microamperes. ठीक है, and ये और ज़्यादा increase हो जाएगा. So yes, अगर आपने इस path में if itself inductor has a higher resistance, in that case आपका inductive current lower होगा. ठीक है. So in this specific circuit, if you consider R of 1 as a load, ठीक है, so minor current is being transmitted to your load and the majority of the current is circulating, AC current is circulating in your circuit. ठीक है, जो आपने concept पढ़ा हुआ है. अच्छा, so one more element जो मैंने आपको बताया था, इसमें बैलेंसिंग एलिमेंट आ जाता है. एग्जैक्टली सेम वैल्यू ऑफ एल आई जो है, इसका आप कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग कैपेसिटर वैल्यू. ये मैंने आपको फार्मूला बताया था. यू नो द वैल्यू ऑफ योर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करें. कनेक्टेड विद पैरेलल टू योर इंडक्टर. ठीक है, कनेक्टेड विद सीरीज टू योर इंडक्टर. दिस वाज व्हाट आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल. ठीक है, एंड देन सी द डिफरेंस. ठीक है, is there any change in your current values? Either your R is taking more current or not. ठीक है, go for that concept because यही मेरी आपकी assignment में मैंने आपको specify किया था. अच्छा, let's replace it with okay, I didn't stop it. ठीक है, let's delete it for a moment and we are replacing it with a capacitor. एनी कैपेसिटर. एग्जैक्टली सिमिलर ऑपोजिट नहीं ले रही मैं फिलहाल, बट यू कैन. ठीक है, यू कैन यूज एन एग्जैक्टली ऑपोजिट वैल्यू कैपेसिटर. लेट्स गो फॉर 100. इट्स अ हायर वैल्यू कैपेसिटर. ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर अ स्मॉलर वैल्यू. ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें 10p को. Again, I am connecting it with capacitor, resistor and then grounded. ठीक है. You can change your frequencies. You will see the difference in that case as well. ठीक है. अच्छा, आपका current 1.410 मिली एम्पेयर जनरेट हो रहा है in this case and तकरीबन ऑलमोस्ट सेम करंट आपका रजिस्टर ले रहा है, बट कैपेसिटर इज स्टोरिंग. ठीक है, यू नो दैट कॉन्सेप्ट. ठीक है, but minor current is still flowing through this path which is in nano amperes. Go for one more concept. मैंने आपको कहा था if you are using capacitor आपका just जो phasor diagram है वो flip जाएगी for your currents. ठीक है, change its frequency. ठीक है, let's drop it. No, don't keep it in kilohertz, keep it in just hertz. 10 hertz. Oh, 10 is very less, so let's go for let's say 100. ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं. ओके, सॉरी फॉर दैट. 100 हर्ट्ज. ठीक है, रीसिमुलेट इट. अच्छा, 84.85 नैनो एम्पेयर्स, 1.41 1.41. ठीक है, आपने फ्रिक्वेंसी चेंज की. मेन जनरेटिंग करंट में इतना डिफरेंस नहीं आया, बट कैपेसिटिव करंट में आपका चेंज आया है. प्लस वन मोर एलिमेंट. अब इसी को आप इंडक्टिव के साथ रिप्लेस करें. जस्ट योर कैपेसिटर. एंड फाइनली आई विल रिप्लेस योर जो आपकी सोर्स थी विद फंक्शन जनरेटर. flip 90. Okay, now if you remember the concept of currents, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि इंडक्टिव में नॉर्मली आपका करंट मैक्सिमम करंट फ्लोज, पर कैपेसिटिव में क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज सोर्स. बट दैट डेफिनेटली वो आपका डीसीज के लिए था. सो यू कैन see just a minor effect of that.
currents value यहाँ पे. But let's not just go into those details जो आप लोगों की initial labs में थी. Let's just move toward your function generator. All you will be doing in this lab is that आपने signal दिया, आपने 3 current values ली, and then you put them in your formula, ठीक है, and then you calculated the value of your power in watts, ठीक है. The power which involves the फेज एंगल, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा का एलिमेंट जिसमें इन्वॉल्व था वो आपने पावर कैलकुलेट की, मींस रियल पावर with this entire 3 ammeter method, ठीक है, instead of using any watt meter. Watt meter का I told you कि वो आपको just real power calculate करके देता है, but with the help of 3 ammeter and 3 voltmeter method you can calculate the cos factor, means your power factor. You can calculate apparent power, you can calculate real power. All of them can be calculated with these methods, but yes, limitations होती है. Every method has a limitation phenomena, ठीक है. Now this is your function generator. अगर आप if you can recall जो lab में मैंने performance की है and it has been uploaded, उसमें when I connected with function generator I use these two types as well. You can use them to just go through the concept, but yes, हमारी जो formula calculation है those are for sine values, ठीक है, means sine version of signal, ठीक है. So let's just be in sine version, ठीक है. एम्पलीट्यूड्स बेसिक में यस डेफिनेटली आप एम्पलीट्यूड चेंज करें, फ्रिक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं कर लें, ठीक है, नहीं करना चाहते इन दैट केस अब लेट्स जस्ट चेक इन दिस वर्जन, ठीक है. ये आपके हो गए 3 सिग्नल. अब फ्रिक्वेंसी चेंज करते जाएंगे, करंट आपके चेंज होते जाएंगे. Okay, I did maybe any error. Plus is connected with plus. अच्छा 10 frequency is very less. Yes, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज करें. Okay, now fine, ठीक है, it's almost close to DC. So if I'm going in the concept of DCs, then आपका AC version के ammeters definitely they won't be playing any signals, ठीक है. So 100 hertz, 10 amplitude आपके currents you can see now this is in ampere, but majority current is again flowing with from your inductor. Let's make it 30 for example. Okay, fine, 31. अच्छा, इससे आपका करंट रेजिस्टिव पाथ से ये ओके दिस वर्जन डोंट बी इन नैनोज एंड पीकोस, ठीक है, दिस इज फाइन. स्टॉप इट एंड रीप्ले इट फॉर करेक्टर वर्जन ऑफ रीजन, ठीक है. 26 एम्पियर्स आपका जनरेट करिए सोर्स एंड इतना आपका फ्लो है फ्रॉम योर रजिस्टर एंड मेजॉरिटी इज फ्लोइंग थ्रू योर इंडक्टर. इस रेजिस्टेंस को इफ यू वांट टू इंक्रीज आपका थोड़ी बैलेंसिंग नॉर्मल होगी, बट यू कैन यूज दीज वैल्यूज, ठीक है, दीज आर फाइन, देयर इज नो एज सच इशू. आप इनसे इजीली यू कैन पुट देम इन फार्मूला, यू नो द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस आर एंड यू कैन जस्ट put it in your formula and you can calculate the wattage power. If you want to क्रॉस चेक, ठीक है, क्योंकि वॉटेज पावर इज़ फॉर योर रजिस्टर. आप यहाँ पे एक वॉट मीटर ऐड करना चाहें बट जस्ट डोंट गो फॉर इट राइट नाउ, ठीक है, but you can, ठीक है, you can place a watt meter here and you can calculate the values of your but we will use watt meter when once we have been gone through the next 3 set of labs, ठीक है. उसमें आप watt meter को use करेंगे, you will see the function of watt meter because recently we hadn't discussed the watt meter, so let's leave it for those labs, ठीक है. So this is all for your lab. Change your values of amplitude, frequencies, take set of readings, ठीक है, and just put them in formula, calculate your power in watts, ठीक है, dissipated in your resistive side, right? So this is all for your lab number 2 part B, ठीक है, 3 ammeter methods.